अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप लार्किन को। इनकी 2 पोएम्स हैं, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ मिस्टर ब्लीनी एंड द सेकंड वन इज़ चर्च गोइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनका जो है हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आप पीडीएफ काइंडली शेयर कर दिया करें। तो शुरू में मैं किया करती थी, बट आप लोग का इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने फिर बंद कर दिया, फिर मैंने नहीं शेयर किए। तो इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको एक लिंक अटैच करूँगी मैं, उसके अंदर सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, प्रीवियस वीडियोस के भी और जो अपकमिंग वीडियोस हैं इनके भी आप लोगों को जो हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। जस्ट आप लोगों ने सर्च करके निकाल लेने हैं। जो इसका टाइटल होगा वही पीडीएफ का टाइटल होगा, ठीक है। तो यहाँ भी फिलिप लार्किन की बायोग्राफी देख लेते हैं। फिलिप लार्किन वाज एन इंग्लिश पोइट, नॉवलिस्ट एंड लिब्रेरियन आफ्टर ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द लीडिंग पोइट ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एरा इन ब्रिटेन। He was born 9 August 1922 and he was died on December 2, 1985. Attend King Henry College. अच्छा, ये अगर आप लोगों ने करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो सिर्फ born and died तक आप लिखें, अदरवाइज राइटर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती। जस्ट हमने पॉइंट्स वगैरह को डिस्कस करना था, ठीक है। सर्व्ड इन द रॉयल एयरफोर्स फ्रॉम 1943 to 1946। उसके बाद आप लोग आ जाएं। ही फेस्ड हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग थ्रोट कैंसर, कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। मिस्टर ब्लीनी पोम्स में यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर ब्लीनी इज़ अ पोम बाय ब्रिटिश पोइट फिलिप लार्किन रिटन इन मई 1955. It was first published in the Listener on 8 September 1955 and later included in a Larkin's 1964 anthology, The Western Wedding. Speaker in the poem is renting a room and compares his situation with the one of the previous renter, Mr. Bleany. Modern life is full of worries, company can be found anywhere, yet heart remains isolated. Loneliness is a major problem, especially in developed countries. In Mr. Bleany, Philip Larkin, after doing critical analysis of a personal life, concludes that modern life is entirely tasteless, emotionless, boring and dull. Some critics believe that the poem is highly autobiographical. In this poem, poet tells us we are too much far away from nature and we are not enjoying nature fully. Themes in Mr. Bleany poem. The first one is loneliness. Loneliness is an important theme in this poem. The poem shows Mr. Bleany's lonely life, who lives in a rented room with little interaction with other people. It shows the solitude of Mr. Bleany's life. He lived alone in a rented room. The absence of companionship shows loneliness and isolation of Mr. Bleany. This poem is all about the modern individualistic problem. It is all about the trouble of an individual due to the lack interest in art. His life was far away from creativity. Lack of creativity. Lack of creativity is also an important theme in Mr. Bleany's poem. Due to lack interest in art, his life was far away from creativity. The absence of imaginative and inspiring elements in his surroundings shows a lack of creativity in his life. Ambitionless life. Ambitionless life, another important theme in Mr. Bleany's life, is shows as lacking ambition. He lives in a rented room. Lack of creativity without goals or inspiration shows that his life is full of ambitionless. The poem also shows a sense of meaninglessness in Mr. Bleany's life. His room, his life, everything shows meaningless in his life. In this poem, the poem creates a sketch of a person named Mr. Bleany. He has painted his character very realistically. The second poem is, अगर आप लोग ये इसका थीम्स वगैरह कर लेते हैं तो आपका जो ये क्वेश्चन है अच्छी तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। जस्ट राइटर्स को थोड़ा सा इंट्रो दे दें और साथ में ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सिर्फ यही नोट्स जो हैं वो रेडी किए थे, ठीक है। इन्हीं को मैं लिख के आई थी और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे माशाल्लाह। तो यहाँ पे चर्च गोइंग पोम की हम देख लेते हैं। द पोम चर्च गोइंग वाज पब्लिश इन हिज पोइटिक कलेक्शन द लेस्ट रिसीव्ड इन 1954. दिस पोम डील्स विद द क्वेश्चन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली प्लेस लाइक चर्च इन द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन. Church Going by Philip is a thought-provoking poem about religion and history. The speaker decided that no matter what church represents, they should be productive. Themes in the church going poem. मैं इसको पहले फ्लाइट मोड पर लगा दूँ, किसी की भी कॉल आ जाती है तो इस वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं. Themes in church going, religion. The major theme of this poem, clear from its little church going, is religion. The speaker is not a religious and he had a disrespect attitude toward religious belief. Religious belief is disappearing. The boring flower dying in church symbolizes the dying of the
religion. This poem shows the decline of religion. The speaker, a skeptic who visit a church while biking through the countryside. Philip Larkin was an atheist. Atheist वो होता है जिसको अल्लाह ताला पे इतना ज़्यादा अल्लाह पे इतना यकीन नहीं होता और वो जो है शक व शुबहात के वाक़े में रहता है अस्तगफिरुल्लाह. And superstitions highlights the decline of belief and its overgrowth similar to the overgrowth of the church building. But in the last few stanzas of poem, he takes a more respect toward a church because it plays a significant role in holding record of marriage, birth and death, human curiosity. This poem also shows the innate human curiosity to explore and understand the world around us. The speaker visit the church symbolize their curiosity and the human need to explore the places of cultural and spiritual importance. A serious hunger. The speaker, a non-religious individual, stop in church and feeling it's a waste of time. He don't know why he's in a church, without a specific reason. The poem highlights the church as a serious home on earth. अच्छा, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे आप ना इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी बोला करें, तो काइंडली मैं इतनी ईजी वर्डिंग यूज़ करती हूँ कि उर्दू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. नर्सरी क्लास का बच्चा भी इसकी उर्दू कर सकता है. मैं वैसे नहीं कह रही जैसे हमारी टीचर्स कहती हैं, वो वाकई टफ होती है जिनकी वो कभी कभी उर्दू नहीं कर रही होती, लेकिन ये वाकई ही इजी वर्डिंग में मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं और इंशाल्लाह अगर आप लोग इन्हें लेके जाते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, इन्हें लिखते हैं और यही नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. द ऑथर डिस्कवर अ ह्यूमन हंगर फॉर चर्च फॉर completing their needs. There is a human hunger for purpose and meaning. Church going touches upon the human need for rituals and tradition. The speaker is not a religious person. He repeatedly reminds readers that he is not a believer, not a church goer himself. This poem had 7 stanzas with the rhyme scheme of A, B, C, A, C, D. Rhyme, meter, form, alliteration techniques used in this poem. तो यहाँ पे हमारी 2 पॉइंट जो हैं वो डन हो चुकी हैं. अगर आप लोग इसी के नोट्स प्रिपेयर कर लें जैसे मैंने किए हुए हैं और इसका PDF भी मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूँगी. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.